Okay, good morning, class. We will start with environment and ecology. Okay, environment and ecology. Okay, this is the component that we are going to start. This is the first lecture. Okay, environment and ecology is first lecture. Okay, so the first topic, that is climate change. The first topic that I will take up is climate change, because it is very much related to the current affairs. It is very much related to the current affairs. Okay, this climate change, it is very much related to the current affairs. So I will take up this first topic, that is current affairs, sorry, climate change. Okay, okay, सारा का सारा खेल आजकल क्लाइमेट चेंज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, सब का सब इसी के आसपास घूम रहा है. ओके, क्लाइमेट चेंज इज द फर्स्ट टॉपिक. This is the first thing that we will be discussing. Is that clear? Is that clear? But before going further, we will have a look at what is actually climate, because climate and weather, these are two terms. These are two terms. Okay, you must be able to distinguish between the climate and the weather. Okay, most of you might be interchangeably using these two terms, the climate and the weather, but इनका जो context hai, that is totally different. Is that clear? Is that clear? So what is weather? Weather is the day to day. ठीक है, like what is the temperature today? What is the rainfall oblique precipitation today? Precipitation is a broader term. Okay, precipitation is a broader term. Rainfall is one of the type of precipitation, one of the form of the precipitation. Is that clear? Okay, temperature क्या आपका, precipitation क्या आपकी, wind patterns क्या हैं आपके. ठीक है, आपका sky cloud से clouded है, कैसा है, ठीक है, या आपका humidity कैसी है. That all what is out there today, that gives you the weather, that tells you about the weather, that tells you about the weather day to day, on daily basis, on a daily basis. Is that clear? Is that clear? Like in summers the temperature are slightly higher. Okay, then in the winters slightly they are very much higher. काफी difference आ जाता है 15 to 20 degree if you talk of the northern part of India. तो 15 to 20 degree का difference is very much common. Okay, इतना होता ही होता है. ठीक है, तो that thing you see daily basis पे, that is weather, that is weather. आज का weather कैसा रहने वाला है? बाहर clear sky है. ठीक है, clear sky है अगर तो आपका sunny रहेगा. ठीक है, टेम्परेचर स्लाइटली हायर रहेगा कल से. अगर कल क्लाउडी था तो आज अगर बारिश होती है तो आज का वेदर कैसा है, बारिश वाला है, रेनफॉल होगी. ठीक है, तो लेकिन क्लाइमेट की जो हम बात करते हैं, क्लाइमेट इज द एवरेज, क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल आइटम्स, ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स, ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स, द एवरेज ओवर 25 to 30 years, एवरेज ओवर 25 to 30 years. इज दैट क्लियर? 25 to 30 years के एवरेज जो आप लोगे किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट्स ऑफ द वेदर. ओके, ऑल ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट्स ऑफ ऑल दिस पैरामीटर्स ऑफ द वेदर, तो दैट गिव्स यू द क्लाइमेट, दैट गिव्स यू द क्लाइमेट, दैट टेल्स यू अबाउट द क्लाइमेट. नाउ इट इज क्लियर, नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज वेदर, व्हाट इज क्लाइमेट. लाइक यू एक्सपेक्ट कि कश्मीर में विंटर्स दे आर स्लाइटली कोल्डर देन इन द जम्मू रीजन. ओके, कश्मीर की विंटर्स स्लाइटली कोल्डर रहती हैं. ठीक है, या वी टॉक ऑफ सदर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया की बात करें अगर हम, तो सदर्न इंडिया में लाइक इन केरल, लाइक इन दिस मुंबई, ठीक है, द कोस्टल रीजन्स, वहां पे आपका जो टेम्परेचर रहता है, जो वेदर रहता है या क्लाइमेट रहता है, क्लाइमेट आपका मॉडरेट रहता है थ्रू द ईयर. क्या रहता है आपका? मॉडरेट रहता है. लेकिन वहीं पे अगर आप देखते हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न पार्ट में आपके, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तो टेम्परेचर और क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो रही होती हैं. इज दैट क्लियर? बहुत एक्सट्रीम्स आ जाते हैं आपके पास, विंटर्स बहुत एक्सट्रीम होती है, समर्स बहुत एक्सट्रीम होते हैं. तो दैट इज द पैटर्न दैट इज बीन देयर फॉर द सेवरल ईयर्स नाउ. ओके, वी टॉक ऑफ, व्हेन वी टॉक ऑफ एवरेज, दैट गिव्स यू द क्लाइमेट. तो आप जब नॉर्दर्न पार्ट की बात करोगे तो आपके पास आता है सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट. क्या आता है आपके पास? सब ट्रॉपिकल. और वहीं पे अगर आप सदर्न पार्ट की बात करोगे तो आपके पास आता है ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट. आता है, आता है. सो दैट इज द एवरेज जो हमें पता चला है पिछले 25-30 ईयर्स की. आपने पूरी की पूरी स्टडी की है, आपने पैरामीटर्स की रीडिंग्स नोट की हैं, एंड देन यू कैन टेल कि व्हाट could be the temperature, what could be the rainfall in this particular month, what could be the temperature in this particular month, what would be the humidity in this particular month. That is the climate, that is the climate. Actual क्या है? That is the weather, that is the weather. वो
एवरेज से डिफरेंट हो सकता है, एवरेज से डिफरेंट हो सकता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ यू हैव दिस फेयर आइडिया ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है जनाब, किसी कुछ पूछना है? Okay, so coming to this climate change now, what is this climate change? Okay, why so much concern regarding this particular thing? Climate change, simply अगर आप देखोगे, the change in average of the climatic variables, the change in average of the climatic variables. Clear, as simple as that. But over a period of time, say 25 to 30 years, say 25 to 30 years, say 25 to 30 years, हम ऐसे नहीं बोल देंगे कि अभी आपके पास एक दिन बारिश हो गई और मान लो ड्राइस्ट मंथ में, listen, if in a driest month you receive rainfall, ठीक है, and that rainfall is in variation with the past year, से आपका अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दैट इज दीज आर वेरी ड्राई मंथ्स इन नॉर्दर्न इंडिया। ओके, तो अगर उन मंथ्स की अगर आप बात करो तो किसी एक पार्टिकुलर दिन या एक हफ्ते में आपके पास बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, लास्ट ईयर बारिश नहीं हुई थी, आप इसको क्लाइमेट चेंज नहीं कहोगे, क्लाइमेट चेंज नहीं कहोगे, इट इज जस्ट एन एबरेशन, इट इज जस्ट एन एबरेशन। अब क्लाइमेट चेंज कब कहोगे? जब इस साल भी बारिश हुई, अगले साल भी बारिश हुई, उसके अगले साल भी बारिश हुई, उसके अगले साल भी बारिश हुई, और पिछले 10-20-25 साल में कभी बारिश नहीं हुई। अब इसी एवरेज को आप 15-20 साल तक कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करोगे और फिर आप देखोगे कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। इज दैट क्लियर? सो दैट विल अमाउंट टू द क्लाइमेट चेंज। Aberration is not climate change. Listen, aberration in the weather phenomena, in the weather, that is not climate change. If that aberration persists over a period of time, if that aberration, if that variation persists over a period of time, only then it will lead to the climate change. Is that clear? Is that clear? Because when we discuss this climate change, I told you this climate is the average over 25 to 30 years. Average over 25 to 30 years. Different nations, different countries, different organizations have different parameter regarding this climate. कोई 20 years का ले रहा है, कोई 25 years का ले रहा है, कोई 30 years ले रहा है, कोई 35 years ले रहा है। तो हम for our sake हम 25 to 30 years का average ले रहे हैं। Is that clear? And when this variation is there for this particular time span, say for 25 to 30 years, when you consistently observe the weather has changed, the pattern has changed, ठीक है, तो then we will say that there has been a climate change, then there has been a climate change. Is that clear? एक साल नहीं देखने से, एक साल देखने से नहीं। Okay, okay, now you guys tell me, is global warming climate change? Okay, I will rephrase this question. Are global warming and climate change the same thing? ओके, इट इज द इफेक्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब इट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, ओके, बिकॉज ग्लोबल कूलिंग कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। In the current paradigm, listen, in the current paradigm, we are witnessing warming phase. We are witnessing a warming phase. But in the past, there has been cold phases as well. There has been cooling period as well. El Nino ki? No. That is not something. That is just an aberration again. Okay? और उसका कोई fixed pattern आपके पास नहीं है. ठीक है? El Nino is getting affected because of climate change. La Nina is getting affected because of climate change. That El Nino and La Nina, these are not climate changes. These are not climate changes. The effect of climate change can be there on the La Nina, on the El Nino. But La Nina and El Nino itself are not climate changes. Is that clear? There can be effect of the climate change on these two things. Okay. And if we say कि वो effect persistent रह रहा है over the several years, so then we will say कि this is one of the aspect of the climate change that is there. Like deglaciation. Listen, like deglaciation. Deglaciation हो रही है, glaciers are getting melted. This is one of the effects of climate change. This is one of the effects of climate change.
global warming is just one aspect of climate change, but in the current paradigm, this global warming is because of the change in climate, or you can say this global warming is also contributing to the climate change. But अगर आप होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देखोगे क्लाइमेट चेंज को समझने की कोशिश करोगे, नॉट इन द करंट पैराडाइम ओनली, बट इफ यू गो थ्रू द हिस्टोरिकल रूट्स, ओके, इफ यू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दिस अर्थ, तो देन यू विल सी कि देयर हैज बीन cooling period as well, and that cooling period again was the climate change. There has been complete glaciation. Okay, most of the areas of the earth, they were covered by the glaciers. That was also climate change. That was also climate change. So climate change can be on both the scales. There can be cooling, there can be warming. But in the current paradigm, we are witnessing global warming. But at the same time, there are certain areas that are witnessing cooling as well. Okay, in certain areas the temperatures are getting very much low. हो रहा है ना? So that is again the effect of climate change. That is again the effect of climate change. किस एरिया में कौन सी चीज कैसे अपने आप को मैनिफेस्ट करेगी, that is a whole different story. But we are talking of the earth as a whole. Earth as a whole is witnessing global warming. Global warming is not the climate change. It is one of the aspect of the climate change. Is that clear? Climate change, global warming is just the increase in temperature. Listen, global warming is just the increase in the temperatures. Don't get confused. Listen, इस चीज को समझना. Global warming, if you look at global warming, it is just increase in average temperatures. Okay, not on a particular day. एक particular day की बात नहीं करते हम. Not in a particular week, not in a particular month की बात नहीं करेंगे. On an average, the earth is witnessing the increase in temperature. On an average, that is the global warming. That is the global warming. But at the same time, there can be some areas, those are witnessing the drop in temperatures. Winters are very much cold in certain areas. That is again effect of climate change. But this global warming is just related to the temperature. Global warming is just related to the temperature. Is that clear? But when we discuss climate, what I told you, climatic variables आपके पास क्या क्या आते हैं? You have precipitation, is again a climatic variable. ठीक है, temperature is just a climatic variable. It is again climatic variable. Okay, wind patterns, they are also your climatic variables. हैं आपके पास? Your humidity, that is again a climatic variable. Climate variable है आपके पास सारे के सारे. But how can you say कि just temperature is the climate change? Increase in the temperature is the climate change? No, all these phenomena, they together contribute to the climate change. We will look at all these phenomena, precipitation, temperature, wind, humidity, इन सब चीजों पे हम देखेंगे. Only then we can say that there has been climate change. Not just one parameter, just one variable cannot decide. Though इसकी वजह से बाकी सारे के सारे इफेक्ट होते हैं. But when we talk of climate change, we look at all these things. We look at all these things. We look at cloudiness as well. That is again a climatic variable. That is again a climatic variable. Is that clear? Is that clear? No, don't say global warming is climate change. It is just one of the manifestations of the climate change. बहुत सारी manifestation में से एक manifestation क्या है? Climate change की global warming. In the current paradigm, I have been telling you in the past we have witnessed the cooling phases as well. Is that clear? That again was the climate change. But in the current paradigm, we are witnessing the increase in average temperatures across the earth. Is that clear? Is that clear? बोलो यार, yes या no तो बोलो. No, we cannot say. El Nino gets affected because of the climate change. In local, देखो हम climate change किसी एक particular region की बात नहीं कर रहे. Sorry. Please repeat. For example, El Nino is our climatic effect, right? Our climatic effect की वजह से Okay. हमारे glaciers melt हो रहे हैं, rise in temperature हो रहा है, तो उससे global warming हो रहा है. No, global warming आपका हो रहा है. In the current paradigm, the global warming is largely because of the accumulation of the greenhouse gases in the atmosphere. Is that clear? The first thing, we will discuss all these causes. I will come to these causes later on. Okay, listen, you, what is your name? Umar, listen. El Nino was there earlier as well. La Nina was there. Okay, it is still here. कहीं नहीं गया. Frequency change हो सकती है. इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, ठीक है, बट इट वाज देयर, इट इज हियर.
ओके, था आपके पास, पहले भी था, आज से 100 साल पहले भी था, अभी भी है। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, बट वी कैन नॉट से कि एल नीनो इज एट्रीब्यूटिंग टू द क्लाइमेट चेंज। ओके, there can be effect of change in frequency and intensity of El Nino in the climatic in the average of the temperature, average of the precipitation across a particular region. But when we talk of the whole earth, हम नहीं कह सकते कि El Nino is leading to climate change. हाँ, यह है कि change in frequency and intensity of El Nino may lead to change in precipitation, may lead to change in temperature, may lead to change in humidity across a particular region, across a particular zone. वहां पे हमें इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, बट टू द ग्लोबल क्लाइमेट व्हेन वी लुक एट द ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ एज अ होल, वी कैन नॉट से कि एल नीनो इज एट्रीब्यूटिंग टू द क्लाइमेट चेंज। ओके, क्लाइमेट फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ एल नीनो इज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इट मे गेट डिस्टर्ब्ड, जो एवरेजेस थे वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, वो एक मैनिफेस्टेशन हो सकती है क्लाइमेट चेंज की, है भी, इनफैक्ट है भी, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज leading to the frequency change in frequency and intensity of the El Nino, but El Nino as a phenomena हम नहीं कह सकते it is leading to climate change। उसकी वजह से, उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की वजह से आपके पास ग्लोबल रीजनल पैटर्न्स आप में को वेरिएशंस देखने को मिल सकती हैं आपको, बट पूरी अर्थ पे आप उसका इफेक्ट नहीं देख सकते। दैट इज नॉट लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, दैट इज नॉट लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। द करंट क्लाइमेटिक चेंज दैट वी आर विटनेसिंग, द वार्मिंग फेज दैट वी आर विटनेसिंग, इट इज सोलली बिकॉज ऑफ द accumulation of greenhouse gases in the atmosphere. That's why it's a concern. किसकी वजह से? हाँ हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो तभी ग्लोबल वार्मिंग ये सब होता है। ठीक है, लार्जली छोटे लेवल पे या हाई लेवल पे जितना क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, तो जैसे मैंने एल नीनो की बात की, हाँ, तो एल नीनो जब होगा वो फैक्टर्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी, मीथेन, वो कैसे बढ़ेंगे, वो कैसे बढ़ेंगे? एल नीनो इज नॉट लीडिंग टू द जनरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। It will lead to generation of carbon dioxide when there will be forest fire because of El Nino. There are the results of El Nino. Okay, होते हैं आपके पास। Australia witnesses forest fires. Indonesia may witness forest fire. These regions may witness forest fire. Okay, India also receives lesser rainfall. ठीक है, there may be change in land use that can lead to the accumulation or generation of the greenhouse gases, but El Nino as such will not lead to generation of greenhouse gases. Because of El Nino there may be, but as such El Nino is, what is El Nino? No, what is actually El Nino? It is just a phenomena, it is just a weather phenomena that is there, the change in pressure between the eastern and western Pacific Ocean, that is just that thing, और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। That is tied to the global this global pattern of winds, that is tied to the global variations, ठीक है। उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, अफ्रीका तक देखने को मिलता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया में देखने को मिलता है, बट दैट इज नॉट लीडिंग टू द क्लाइमेट चेंज। दैट मे गेट चेंज ड्यू टू दिस चेंज इन क्लाइमेट। ओके, ओके, यू विल गेट अ फेयर आइडिया। जस्ट लेट मी बताइए आप। हाँ हाँ, एक्चुअली होता क्या ना कि there are certain theories. Okay, there is too much difference in views regarding this global cooling and global warming. Okay, some of the scientists they say कि the earth has witnessed the warming phases as well, earth has witnessed the cooling phases as well. Okay, and some of the scientists, okay, they say कि the earth is going through the warming phase in the present times. Okay, ultimately after reaching the peak of this warming phase, we will witness the drop in temperatures. Okay, but that effect is over the thousands of years. Okay, that takes place over the thousands of years. But at the same time, there is something that is more concerning, is the accumulation of these greenhouse gases in the atmosphere. That's why we are so much worried about the climate change. That's why. Okay, there is this view कि देखो, if you talk of the glaciation phase, if you talk of the Pleistocene, if you talk of the Maunder minimum, if you talk of the Dalton minimum, okay, Maunder minimum or Dalton minimum, when the temperatures of the earth they witnessed very sharp dip in this 1650 to 1715 or something in this particular period. अभी बात हो रही है 400-500 साल पहले की, ठीक है। तो तब तो इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं थी, पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आज पॉपुलेशन है, तो तब भी तो आपके पास टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था ना,
ठीक है। ग्लेशिएशन पीरियड में अगर आप देखोगे, ग्लेशिएशन पीरियड में तो इतना था नहीं प्लेस्टोसीन में, ठीक है, तब तो बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी थी, तो बिल्कुल कूलिंग हो गई थी। उसके बाद कूलिंग के बाद फिर से हमने देखा डिग्लेशिएशन हुई। डिग्लेशिएशन कब होगी? जब वार्मिंग फेज होगा। तो वो किस चीज ने उसको कंपेल किया? उस किसी चीज ने तो पुश किया होगा उस चीज को ना, कोई तो उसको कुछ तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। समथिंग इज देयर दैट इज ड्राइविंग ऑल दीज चेंजेस। ओके, सो देयर इज दिस व्यू की नेचुरली अर्थ वार्म होती है, नेचुरली अर्थ होती है कूल होती है, और करंटली हम इस फेज से गुजर रहे हैं। सम ऑफ द साइंटिस्ट दे don't agree with this view in the view of the climate change. They say कि this is just a part of the natural life cycle of the earth and this is absolutely fine. ठीक है, लेकिन वहीं पे आपके कुछ और हैं जो कहते हैं कि we are very much concerned because we are witnessing the accumulation of the greenhouse gases in the atmosphere and it is driving the current global warming phase. Is that clear? That's why this is so much concern. और अभी हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं that may take thousands of years naturally, लेकिन अभी हमें बहुत sharp change देखने को मिल रहा है. That sharp change is because of the human contribution. Is that clear? That's why discussing this climate change it is very important. बताओ. अभी को जो प्रेजेंट का जो है, प्रेजेंट में जो हमारे पास जो डेटा है दैट इज रिलेटेड टू द प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड एंड द पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड एंड द करंट जो भी आपका है उस चीज को हम देख के चल रहे हैं कि व्हाट वाज देयर इन द पीरियड प्रायर टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, 1850 से पहले, 1850 टू 1900 से पहले क्या था, और 1900 के स्टार्टिंग में क्या था, फिर 20th सेंचुरी के मिड में क्या था, 20th सेंचुरी की एंडिंग में क्या था, 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या है। अभी हमारा क्वार्टर खत्म होने वाला है 21st सेंचुरी का, 25 ईयर्स हो जाएंगे इस साल, ठीक है, हो जाएंगे इस साल, हो जाएंगे यार, हम रहे ना रहे हो जाएंगे, ठीक है। तो वो 25 ईयर्स कंप्लीट होंगे, तो अभी क्या हमारे पास आ रहा है? इज दैट क्लियर? ग्लोबल रिकॉर्ड्स हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेस्टोसीन में किसने टेम्परेचर आपका मेजर किया है? वी कैन जस्ट एज्यूम कि दिस वाज देयर, ऐसा था, ये चीजें हमें देखने को मिली हैं बेस्ड ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड्स, बेस्ड ऑन अदर रिकॉर्ड्स, ओके, बेस्ड ऑन द इरोजनल एस्पेक्ट्स, बेस्ड ऑन द वेदरिंग, बेस्ड ऑन ऑल दोस फिनोमिना। क्योंकि आपके पास जियोलॉजी है, आपके पास रॉक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख के, प्लांट्स के रिमेन्स देख के, फॉसिल्स देख के यू कैन एटलीस्ट यू कैन हैव आइडिया कि उस टाइम क्या था। यू कैन हैव आइडिया, ओके, यू डोंट हैव द एग्जैक्ट रिकॉर्ड्स एज सच। उस टाइम तो किसने नहीं मेजर किया था ना, नहीं किया था ना मेजर। ये रिकॉर्डिंग का टाइम तो रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर्स, रिकॉर्डिंग द प्रेसिपिटेशन, रिकॉर्डिंग द स्नोफॉल, ऑल दीज थिंग्स, इट इज अ वेरी लेट कंसेप्ट। जब हमने थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया चीज़ों को, ये बहुत लेट कंसेप्ट है, बहुत अर्ली फेजेस में तो ऐसा था ही नहीं। अदरवाइज तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ह्यूमन यहाँ पे था, लेकिन इस तरह से नहीं था ना। अब टेम्परेचर डिवाइस आज हम थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं, आज से पहले कौन सा थर्मोमीटर था आपके पास? नहीं था ना। चीजें देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन बी जस्ट observed based on the observation we can assume कैसा था। is that clear no okay so now coming to this climate change के दो एस्पेक्ट हम देखेंगे, ठीक है। काजेस की अगर बात करें, one is the natural and the other is the anthropogenic। Other is the anthropogenic. We will have a look at both, ठीक है। हालांकि मेरा कंसर्न सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक है, ठीक है, बिकॉज दिस इज व्हाट इज डिमांड, ठीक है, बट वी कैन नॉट निग्लेक्ट द नेचुरल कॉजेज, वी कैन नॉट निग्लेक्ट द natural because we have witnessed glaciation, we have witnessed deglaciation, we have witnessed Maunder minimum, we have witnessed Dalton minimum, we have witnessed the temperature increase in the past as well. That's why we cannot leave these natural causes. Okay, something is there that is driving this whole climate change. Is that clear? Okay, under the natural, anthropogenic I will take up maybe tomorrow. Okay, आज क्या टाइम हो गया है? हाँ, I will take this up tomorrow, but today I will be limiting myself to this natural causes. Is that clear? So the very first thing that is there is the Milankovitch cycles. जनाब बोलिए। The first thing that I will take up is the Milankovitch cycles.
ओके ओके, ठीक है. द सेकेंड थिंग आई विल टेक अप इज sunspots. The second thing I will take up is sunspots. The third thing that we will be discussing, okay, the contribution of this volcanic activity. Somehow we will have to look at this volcanic activity also, because in the recent past, okay, in 1980s, in 1990s, there has been volcanic eruptions which had led to the global change in temperatures. Okay, though that temperature change was there for a few years or few months, but कुछ चीजें थी. That's why we need to take into consideration this volcanic activity. What if the volcanic activity increases on very large scale? अभी तो volcanic activity बहुत कम है, बहुत ही लिमिटेड रीजन्स में volcanic activity देखने को मिल रही है. लेकिन अगर आपकी volcanic activity बढ़ जाए, इंटेंसिटी बढ़ जाए, तो क्या होगा? ठीक है. Is that clear? So largely we will discuss these three things here. And under anthropogenic तो कुछ फॉरेस्ट फायर को कहाँ रखोगे? फॉरेस्ट फायर तो एज सच नहीं, फॉरेस्ट फायर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंथ्रोपोजेनिक में के अंडर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका ग्रीन हाउस गैसेज से लेना देना बहुत कम है. सिर्फ एक वॉल्केनिक एक्टिविटी का ग्रीन हाउस गैसेज से लेना देना है, बाकी किसी का भी ग्रीन हाउस गैस से लेना देना नहीं है. समझे? लेकिन फॉरेस्ट फायर आपकी दोनों रीजन से हो सकती है, नेचुरल रीजन से भी हो सकती है, मैन मेड रीजन से भी हो सकती है. ठीक है, तो दैट्स वाई वील डिस्कस दैट थिंग. जस्ट अ ब्रीफ व्यू, अवर व्यू हम यहाँ पे देखेंगे एंथ्रोपोजेनिक में, बिकॉज दैट इज अल्टीमेटली लीडिंग टू द ग्रीन हाउस गैसेज. एंड in most of the cases nowadays the forest fire, these are because of the anthropogenic regions. Is that clear? ठीक है, नेचुरल ट्रिगर करते हैं, लेकिन आपके पास मैन मेड फैक्टर्स जो होते हैं वो उसको इंटेंसिफाई करते हैं. नेचुरल काजेज क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं. फिर आपके पास मैन मेड फैक्टर्स होते हैं, somehow they intensify these wild forest fires. Is that clear? ठीक है जनाब. सेहत ठीक नहीं है साक्षी? आपकी सेहत ठीक नहीं है? ओके. Okay. Before taking up Milankovitch cycles, okay, you must know something that is the base for these Milankovitch cycles. Okay, पहली चीज ऑर्बिट ऑफ अर्थ. पहली चीज आपकी है ऑर्बिट ऑफ अर्थ. ठीक है, तीनों चीजें डिस्कस कर लेंगे. दूसरा आपका ऑब्लिक्विटी, और तीसरा आपका क्या है? प्रिसेशन. ठीक है, प्रिसेशन में दो टाइप की प्रिसेशन है. एक है आपकी एक्सियल प्रिसेशन, और दूसरी है आपकी एप्साइडल प्रिसेशन. पहली आपकी एक्सियल प्रिसेशन, दूसरी आपकी एप्साइडल प्रिसेशन. ओके, सो दिस ऑर्बिट ऑफ इट इज इन द प्रेजेंट paradigm. Okay, it is elliptical. ठीक है, what is elliptical orbit? Elliptical orbit is something that is not circular. ठीक है, in this sense. ठीक है, if you talk of circular is something like this. When we talk of this elliptical orbit, okay, listen, when we talk of this elliptical orbit, when we talk of elliptical orbit, the sun is focused at one point that is slightly near to the earth, while earth is revolving around the sun. देखो, earth is revolving around the sun. That revolution of earth is in a specified orbit. The shape of that orbit is elliptical. Is that clear? It is not circular. Okay, when earth is revolving, this is earth. Okay, this is earth. At one point of time in its revolution around the sun, it is very much near to the sun, and
what is that particular position called? What is that particular position called when it is very much near to the sun? When it is very much near to the, तो आपसे नहीं पूछा था, you Payal, what is that particular position called? What is that particular position called? And when does it take place? You, Ruby, you tell me, when what is this called? What is this position called? When it is closest to the sun, what is this position called? Perihelion, okay? No, aphelion is, perihelion is closer, aphelion is faster, sorry, far away. Perihelion is closer, okay? ठीक है. And when does it take place? In January. In the first week of January, say 4th of January. ठीक है. हाँ, वो अलग कंसेप्ट है, वो फिजिक्स वालों के पास जाना पड़ेगा आपको. बैकग्राउंड कहीं फिजिक्स तो नहीं है. हाँ, कहां तक? Okay, listen, you guys, listen. So this shape of Earth, it is elliptical. Shape of the orbit of Earth, the orbit in which Earth revolves, it is elliptical. Okay, it is not circular. मुझे बाद में बताना आप क्या पूछ रहे हो. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा. ठीक से रख लो. ओके, सो लिसन. ओके, समझो यार, चीज को ध्यान से सुनना. थोड़ा सा आप लोगों के लिए न्यू कंसेप्ट है. ठीक है, ये जो इलिप्टिकल शेप है, इट चेंजेस इन अ साइकिल. ठीक है, इट गोज फ्रॉम highest elliptical to very low elliptical. okay ठीक है. That means nearly circular, not circular, nearly circular. This orbit of Earth over the thousands of years, okay, this orbit of Earth over the thousands of years, it changes its shape from highly elliptical to nearly circular. But that does not take place in a year, in thousands of years. It takes place over thousands of years. क्या हुआ? ठीक है, सो लिसन. ठीक है, इसी को यहां पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, दिस गोज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर शेप टू स्लाइटली, मतलब नॉट परफेक्टली सर्कुलर, बट लाइक दिस. दिस इज नॉट परफेक्ट सर्कल. ओके, दिस इज नॉट ए परफेक्ट सर्कल. इट गोज फ्रॉम दिस टू दिस एंड कम्स बैक अगेन टू दिस ऑर्बिट ऑफ अर्थ. ठीक है, प्रेजेंट पैराडाइम में इसकी शेप कैसी है? इलिप्टिकल है, हाईली इलिप्टिकल है. ठीक है, समझ रहे हो? ये धीरे धीरे अप्रोच करेगा किसको? नियरली सर्कुलर को. सर्कुलर को नहीं, नियरली सर्कुलर ऑर्बिट को. क्लियर. अब इस चीज को देखो, जब ये इलिप्टिकल है, ठीक है, मान लो ये आपका सन है. ये क्या आपका सन, ये आपकी क्या है? अर्थ है. जब इलिप्टिकल है तो कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जब अर्थ जो है वो सन के बहुत क्लोजेस्ट होगी और बाकी पोजीशन पे फार अवे होगी. कोई एक पार्टिकुलर पोजीशन ऐसी होगी जब अर्थ सन से फर्देस्ट होगी, सबसे दूर होगी. जुलाई में जो होता है एपेलियन आपका, पेरिहेलियन आपका कब होता है? जनवरी में. ठीक है, नाउ लिसन. 4th of July आपका क्या आता है? एपेलियन.
4th ऑफ जनवरी आपका क्या आता है, पेरीहेलियन। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, इस शेप की, जिस शेप में अभी, जिस शेप ऑफ ऑर्बिट में अभी अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, उस शेप की। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब अर्थ इस ऑर्बिट को, नियरली सर्कुलर ऑर्बिट को अप्रोच करेगा, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट द रेवोल्यूशन, थ्रू आउट द ईयर, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जब तक ये नियरली सर्कुलर रहेगा, तो अब इक्विडिस्टेंट रहेगी अर्थ, समहाउ इक्विडिस्टेंट, नॉट एग्जैक्टली, मैंने नहीं कहा कि परफेक्टली सर्कुलर, मैंने कहा नियरली सर्कुलर। तो जो अब आपकी वेरिएशन है, मिनिमम डिस्टेंस की और जो मैक्सिमम डिस्टेंस की, ये कम होनी शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो आप लोग? तो उसकी वजह से जब क्लोजेस्ट होती है अर्थ इसके, तो तब आपके पास जो एनर्जी रिसीव्ड होती है, इंसुलेशन होती है, दैट इज स्लाइटली हायर, होती है ना, स्लाइटली हायर होती है, ठीक है। तो जब आपका ये इवन आउट होने शुरू हो जाएगा, जो डिस्टेंस है, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है और जो फारदेस्ट डिस्टेंस है, जब ये इवन आउट होने शुरू हो जाएगा, जब ये नियरली सर्कुलर ऑर्बिट को अप्रोच करेगी, तो तब क्लाइमेट में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क। हाँ बोलो। जब एपीलियन होता है तब तो कुछ इतना खास फर्क पता नहीं लगता है, जब एपीलियन होता है तब इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी आपके साथ क्या है, ये तीन चीजें एक साथ चल रही है, वो समझो, अकेले नहीं काम कर रहा है। इसलिए मैंने कहा मिलनकोविच साइकिल्स। हम इंडिविजुअल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमने पूरा नहीं समझना है, ये खुद में बहुत वास्ट स्टडी है मिलनकोविच साइकिल्स, समझे? आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव। होता क्या है, इसके साथ साथ आपकी ऑब्लिक्विटी भी डिफाइन करेगी अर्थ का क्लाइमेट, उसके साथ साथ आपका प्रिसेशन भी डिफाइन करेगा अर्थ का क्लाइमेट। ये तीनों चीजें मिलके आपका एक क्लाइमेट जो रहेगा अर्थ पे वो डिसाइड करेगा। इंडिविजुअली इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये तो काउंटर करेंगे कुछ ना कुछ चीजें। जबकि आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होती हैं, जब आपका सबसे नियरेस्ट होता है सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होती है ना, पेरीहेलियन पे हमारे पास क्या होती है, विंटर्स, और एपेलियन पे क्या होता है हमारे पास, कौन गाइड कर रहा है, ऑब्लिक्विटी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें। लेकिन अभी सदर्न हेमिस्फीयर में समर है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में तो समर है ना अभी, तो ऑब्लिक्विटी तो गाइड कर रहा है ना इस चीज को। आप इंडिविजुअल चीज को देख रहे हो ना, आप तीनों के इफेक्ट एक साथ नहीं देख रहे। इज दैट क्लियर? So when it will approach this particular nearly circular orbit, then the difference between the farthest position and the closest position, that difference will even out. That difference will minimize. Throughout the revolution, the Earth will remain at slightly equidistant from the Sun. So जो difference है आपका, the difference है in the insolation received on Earth, that will be minimized. अभी जो आपका डिफरेंस है, that difference is there, क्योंकि क्लोजेस्ट जब रहेगा तो that difference is there, अर्थ इज गेटिंग स्लाइटली हायर इंसुलेशन, ठीक है, फारदेस्ट पे अर्थ इज गेटिंग लेसर इंसुलेशन। लेकिन जब आपका इवन आउट होना शुरू हो जाएगा, जब नियरली सर्कुलर ऑर्बिट पे अप्रोच करेगा, तो तब वो जो वेरिएशन है, दैट वेरिएशन विल नॉट बी देयर, दैट वेरिएशन इन receipt of the insulation, that variation will go down, that difference will go down. Is that clear? So that is guided by the gravitational pull of Sun, Jupiter and Saturn mostly. Okay, these three, one is the Sun, one is the Jupiter, one is the Saturn, because in outer space there are other planets as well, there are other heavenly bodies as well, ठीक है, सिर्फ एक ही अर्थ नहीं है। But when we talk of the solar system, in that solar system it is influenced by the gravitational, earth is in a balanced position, okay, earth is gravitationally balanced. Is that clear? When that gravitational balanced, it gets distributed, it gets disturbed, it varies over the period of time because of the, क्योंकि सब चीजें मूव कर रही हैं, there is nothing that is at rest. अगर रेस्ट पाएगा ना तो everything will destroy. Imagine अगर कल को अर्थ स्टेबल हो जाए, एक ही जगह पे रिवॉल्व करना बंद हो जाए, सैटर्न रिवॉल्व करना बंद हो जाए, जो ग्रेविटेशनल पुल्स हैं, जो आपकी इक्विलिब्रियम बना हुआ है फोर्सेस का पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में क्या पूरे यूनिवर्स में, अगर कोई भी एक चीज अगर मूव करना बंद कर देगी तो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
इमेजिन करो इस चीज को, सब चीजें एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाएंगी, जब टकराएंगे तो रहेगा क्या, कुछ नहीं रहेगा ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट ग्रेविटेशनल पुल बाय द सैटर्न, बाय द जुपिटर एंड द सन, दैट लीड्स टू वेरिएशन इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। बट अगेन फिर वही शुरू हो जाता आपका नियरली सर्कुलर से हाईएस्ट इलिप्टिकल की तरफ। इज दैट क्लियर? सो ये चलता रहता है, ऐसा नहीं है अभी हुआ, अभी नियरली सर्कुलर जाएगा, कुछ टाइम रहेगा, फिर वो धीरे 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 ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर इट विल ट्रांजिशन टू द मैक्सिमम elliptical. Is that clear? Is that clear? So when you see this orbit of the this shape in this change in shape of orbit of Earth, this will also contribute to the climate change. ठीक है, this was first discussed by this astronomer and mathematician Milankovitch. इसलिए उनके पीछे, उनके नाम के बाद हमने इनका नाम लगा दिया है। जिस तरह आपको बोल देते हो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, कुछ भी बोल देते हो, आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, समझे आप लोग? तो दैट इज व्हाई दिस इज देयर। Okay, okay, so this change in shape of orbit over a period of time will also lead to, may also lead to change in climate, may also lead to change in the insolation that is received on the surface of Earth. Okay, is that clear? So that is the first thing that is there, change in shape of orbit of Earth, and this is first aspect of the Milankovitch cycle. Is that clear? जनाब बोलो, ठीक है। We will discuss, I will give you the exact figures as well, but for the sake of understanding, so that you guys understand कि what is exactly happening, you must know Milankovitch cycles. ऐसा नहीं है कि यूपीएससी नहीं पूछ सकती है, यूपीएससी पूछ सकती है, समझे? किसी ने उनको मना नहीं किया कि नहीं पूछना है, किसी ने मना नहीं किया, ठीक है, समझे आप लोग? इसलिए we have to look at these things, that's why I am taking up in this particular topic here, otherwise there is no need. Even I know that there is no need to discuss this Milankovitch cycle, but we cannot leave. Okay, Janab. Yes. Okay. So what is the next? Obliquity. What is obliquity actually? Who will tell me? होनहार बच्चा कौन है? ठीक है. Who will tell me what is this obliquity? Listen, you Sakshi, you Amir and Umar, right? Umar was my classmate as well. Amir was my senior. Sakshi was my classmate. Matlab, not you guys, not the girl named Sakshi. The boy named Umar. They were in school. Sakshi was in university. Okay. She was Sakshi Sharma. ये सब नाम क्या करें यार, हर किसी के लिए अलग अलग नाम कहां से लाएं? मेरा मिल जाता है, कम मिलता है लेकिन। ओके, सो दिस obliquity, who will tell me? सब नीचे, गर्दन नीचे नहीं करनी बेटा, मेरी तरफ देखो। नेहा, what is obliquity? रणधीर, what is obliquity? आमिर, what is obliquity? रांची, what is obliquity? शर्म करो यार, जियोग्राफी तक कॉलेज में नहीं पढ़ा। ओके, माय बैड। ओके, यू उमर, साक्षी, एनी आइडिया? What is actually obliquity? You see, this is the earth, this is the earth, okay, it is revolving in elliptical plane around the sun, it is revolving in elliptical plane around the sun, and this earth axis of rotation, okay, this earth axis of rotation, it is not like this, it is not like this, ठीक है? When we talk of the relation of this axis of earth with respect to the elliptical plane or with respect to the normal to the elliptical plane, normal to the, what is normal? 90 डिग्री वाली लाइन जो होती है, राइट एंगल जो बनाती है, ठीक है? दिस इज द elliptical plane. लिसन, समझ लेना इस चीज को, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं भागने का, ठीक है? आई विल गो स्लो बट यू गाइज मस्ट पे अटेंशन. दिस इज द elliptical plane, दिस इज द elliptical plane. ओके, अब मैं elliptical नहीं बना सकता यहाँ पे, ठीक है? या मैं बना भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, बना देता हूं मैं, ठीक है, मैं बना देता हूं. दिस इज द
elliptical plane. This is the normal to the elliptical plane. This is the normal to the elliptical plane. elliptical plane कौन सा है? जिस प्लेन में, जिस ऑर्बिट में आपकी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, वो कैसा ऑर्बिट है? इलिप्टिकल ऑर्बिट. अगर आप इसकी टू डायमेंशनल शेप लोगे, जस्ट इमेजिन ऐसा हाथ, ये मेरा हाथ है जो अभी इस तरह आप दिख रहा है, टू डायमेंशनल, इसको लोगे तो जिस पे नॉर्मल है आपकी, दिस इज नॉर्मल टू द इलिप्टिकल प्लेन. दिस इज नॉर्मल टू द इलिप्टिकल प्लेन. अर्थ एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है ना. ठीक है. अगर आप उस अर्थ की एक्सिस को लोगे, दैट अर्थ की एक्सिस जो यहां पे थी आपको, ये वाली, दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल टू द इलिप्टिकल प्लेन. दैट टिल्ट ऑफ दिस एक्सिस ऑफ अर्थ with respect to the normal to the elliptical plane is called obliquity. At the same time, this angle here with the elliptical plane, this axis of earth, this is the axis of earth. This makes an angle of 66.5 degree with respect to the elliptical plane. Is that clear? This makes an angle of 23.5 degree with respect to the normal to the elliptical plane and 66.5 degree with respect to the elliptical plane. Is that clear? ठीक है. That 23.5 degree with respect to the normal is known as the obliquity or the axial tilt. आपको तो मैं करूंगा बाद में रिपीट, सभी को रुक जाओ थोड़ा, मुझे क्लास के बाद मिलना 4-5 लोग. देखना, listen, this axial tilt, this is the axial tilt. Okay, this axis makes an angle of 23.5 degree with respect to the normal to the elliptical plane. This angle of 23.5 degree, this tilt is known as the obliquity. This is also known as the axis of tilt. Sorry, tilt of axis or obliquity. Is that clear? ठीक है. But this obliquity, it is again not fixed. This also changes in a cycle. It goes from minimum to maximum, and then again from maximum to minimum. But in a cycle. That is some 22 degree to 24. I will give you the exact figure, don't worry, okay? But this is the 22 degree to 24, okay? इतना ही है, कुछ है इसमें डिग्री, कुछ एक्स्ट्रा है आपके पास थोड़ा सा माइनर. हाँ, 22.1 श्योर. ठीक है. और 24.5, ओके, ये ठीक है आपके पास. देखना अभी कैसे बोलेंगे सब तोते की तरह. ठीक है. I will give you this exact figure, don't worry. But again, this thing happens over thousands of years. This thing again happens over thousands of years. This tilt, it changes from 22 degree. It changes from 22 degree to 24.5, and then again goes to the 22, again goes to the 24. And if you look at this 23.5, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं हम, आज की प्रेजेंट पैराडाइम की, प्रेजेंट टाइम्स की. ठीक है. तो ये 23.5 है. तो इट इज मिडवे बिटवीन द 22 एंड 24. मिडवे में है ना, मिडवे में है, नियरली मिडवे है यार. 0.1 का ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं है, नियरली मिडवे है. इज दैट क्लियर? नाउ लुक व्हाट दिस obliquity leads to. Who will tell me what this obliquity leads to? Who will tell me what this obliquity leads to? थोड़ा सा तो लगाओ दिमाग यार. Who will tell me what this obliquity? यहां तक क्लियर आपको साक्षी? You, Umar, Amir, you guys tell me. This obliquity, then the previous thing that we have discussed, what was that? Orbit of Earth. This is clear? Before that, leave everything. उससे पहले जो भी था छोड़ दो. दैट विल गो ऑन जब तक ये टॉपिक चलेगा. ठीक है. वी विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन वी विल टेक अप. कुछ ना कुछ चलता रहेगा. बट यहां तक क्लियर है ना? obliquity and the shape of orbit of Earth. Now listen, this minimum to maximum, maximum to minimum, what this obliquity leads to actually? This obliquity
leads to change in seasons. This obliquity leads to change in seasons. The change in seasons is because of obliquity. One portion of the earth, one of the hemispheres of the earth that is directed towards the sun, when it is directed towards the sun, it experiences summer. It experiences summer. Okay. अर्थ आपकी ऐसे है, टिल्टेड है, ये बीच में जो काट नहीं रहा है इसको, ये टिल्ट है इसका, ये एक्सियल टिल्ट है. जब अर्थ, ये सन है आपका, ये क्या आपका सन, ये आपकी क्या है अर्थ, ये टिल्टेड है, तो ये वाला फेस अभी क्या एक्सपीरियंस कर रहा है आपका, ये वाला फेस क्या करेगा, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, तो अभी क्या होगा, समर होगा. ठीक है, अभी हमारा जो नॉर्दर्न फेस है दैट इज अवे फ्रॉम द सन, दैट इज अवे फ्रॉम द सन. अभी आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर है दैट इज एक्सपीरियंसिंग दिस समर, तो अभी सदर्न हेमिस्फीयर आपका टिल्टेड टुवर्ड द सन है. दैट टिल्ट डिसाइड्स द सीजन, दैट टिल्ट डिसाइड्स द सीजन. अगर टिल्ट नहीं होता, अगर टिल्ट नहीं होता, लिसन, अगर टिल्ट नहीं होता, गिल्ट नहीं यार, टिल्ट, PILT, ठीक है, अगर टिल्ट नहीं होता, अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रही होती, सॉरी रिवॉल्व कर रही होती, इसकी एक्सियल टिल्ट होता ही नहीं, ठीक है, 0 डिग्री एंगल बना रही होती अगर नॉर्मल टू द इलिप्टिकल प्लेन के साथ, तो ये पूरा का पूरा हमेशा ही एक जैसी सोलर रेडिएशन आती ना, सीजन्स होते ही नहीं, होते फिर सीजन्स कभी नहीं होते ना सीजन्स. ठीक है, अगर टिल्ट है तो सीजन्स हैं, अगर टिल्ट नहीं होते नहीं होता, 0 टिल्ट होता, 0 टिल्ट होता, ना समर होता, ना विंटर होता, ना स्प्रिंग होता, ना ऑटम होता, हमेशा एक जैसा, हमेशा एक जैसा होता ना, होता. Now this will tell me about your understanding now. Okay, what will happen when the tilt is, what will happen when the tilt is 22.1 degree? What will happen when this tilt is 22.1? किसने बोला आपको 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता? कंट्रीज नहीं होती, आर्कटिक सर्कल से ऊपर आपके पास और अंटार्कटिक सर्कल से नीचे, दे एक्सपीरियंस वेरिंग डेज ऑफ डार्कनेस. करेक्ट योर फैक्ट, देयर इज नो रीजन, एक्चुअली कुछ एक पर्टिकुलर बहुत कम एरिया होगा, बहुत कम एरिया, कंट्रीज नहीं, बहुत कम एरिया होगा दैट एक्सपीरियंस नियरली 6 months ऑफ डार्कनेस. नियरली बोला मैंने, नियरली बोला. 66.5 डिग्री से ऊपर जाके नॉर्थ में कंप्लीट डार्कनेस नहीं होती. डार्कनेस एक पर्टिकुलर फेज में आती है, स्लोली स्लोली ट्रांजिशन होती रहती है, समझे, फिर आपके पास कंप्लीट लाइट रहती है, वो भी एक पर्टिकुलर दिन के लिए पूरा दिन लाइट रहती है, या 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए पूरा लाइट रहती है, फिर समझे आप लोग. ओ यार, कंसेप्ट क्लियर करने वालों को ने गलत पढ़ाया था ना, मैंने थोड़ी गलत पढ़ाया, मैं थोड़ी बचपन में टीचर, मैं था बचपन में टीचर, मैं बचपन में टीचर था आप लोगों का. तो वो 6 महीने दिन 6 महीने रात वाला कंसेप्ट छोड़ो, वी विल डिस्कस, आई विल टेक दैट अप बट इन सम अदर क्लास. वो मेरा यहाँ पे कंसर्न नहीं है, यहाँ पे मेरा कंसर्न नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि वो ज्योग्राफी कंसर्न है, मेरा कंसर्न नहीं है, ठीक है, वो मेरा कंसर्न नहीं है. वी विल, क्योंकि वो खुद में एक काफी अच्छा कंसेप्ट है, वो समझना जरूरी है, ठीक है, लेकिन वो बात की बात है. एंड व्हाट इज दिस, नो यू हु विल टेल मी 22.1 डिग्री जब होगा टिल्ट, तब क्या होगा, तब क्या होगा, बताओ यार. मॉडरेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, मॉडरेशन. मैक्सिमम टिल्ट जब होगी आपकी 24.5. मॉडरेशन किस में, सीजन्स में, समर और विंटर का कंट्रास्ट कम हो जाएगा, समर विंटर का कंट्रास्ट कम हो जाएगा जब टिल्ट कम होगी, लेकिन जब मैक्सिमम टिल्ट होगी आपका एक्सट्रीम्स बढ़ जाएगा, समर का कंट्रास्ट और विंटर का कंट्रास्ट जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस विल इंक्रीज. इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर. और करंटली अर्थ इज मिडवे, 23.5 डिग्री टिल्ट है. नाउ वी आर
going toward the change in this tilt. अभी हम मिडवे में हैं, but this again takes place over the thousands of years. 41,000 years का साइकिल है शायद, ठीक है, और सो तो है ना, तो दिस चेंजेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, तो वो हमारा कंसर्न तो नहीं है. ह्यूमन लाइफ स्पेन कितना है, 70 इयर्स 80 इयर्स, इतना ही हमारा पर्सन, एक ह्यूमन का अगर लाइफ स्पेन देखोगे तो हमारा कंसर्न वो नहीं आएगा. तब भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये चीजें अल्टीमेटली आपकी जो इंटेंसिटी है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी, आपकी जो सीजन्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस करेगा. और जब ये इन्फ्लुएंस होंगे तो तब आपके पास क्लाइमेटिक वेरिएबल्स अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे. इसलिए वी आर डिस्कसिंग द चेंज इन ऑब्लिक्विटी एज वेल. वी आर डिस्कसिंग द चेंज इन ऑब्लिक्विटी एज वेल. इज दैट क्लियर? Is that clear? So what this obliquity means? Obliquity means this tilt, and this change in obliquity may lead to change in the seasons, change in the contrast between the seasons, that is the summer and the winters. Is that clear? That's why this obliquity is also, understanding the change in obliquity is also important to gain an insight over all these things, over the change in climate. Is that clear? That's why we are discussing the natural factors that are responsible for the climate change. कि कहीं natural factors ही तो responsible नहीं है present paradigm में. Is that clear? हम ऐसे ही परेशान हो रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस को लेके, इसलिए पढ़ना जरूरी है. एंड द थर्ड थिंग इज प्रिसेशन. द थर्ड थिंग इज थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट समझना, ठीक है. द अर्थ एक्सिस करंटली इन द स्पेस, ओके, in the universe out there, the earth axis currently points towards Polaris. Currently it points towards Polaris. Is that clear? Currently, if you look at the look in the space, if you look in the universe, the axis of earth, it is constantly in one direction, that is towards the Polaris. That is towards the Polaris. Is that clear? Is that clear? Okay. So this Polaris, but over the period of time, due to change in tidal pull by sun and the moon, the equatorial region of earth may experience bulge, may experience wobble. This axis may start pointing toward a different star, toward a different star, say Vega, क्योंकि ये चेंज होता रहता है. इन द फ्यूचर इट में पॉइंट टुवर्ड्स वेगा, ठीक है, पास्ट में किसी और का था, ठीक है. तो बट दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ अर्थ, दिस इज नोन एज द प्रिसेशन. दिस इज नोन एज द प्रिसेशन. इफ यू लुक एट दिस फिगर होल अगर आप पर्सपेक्टिव देखोगे तो ये अभी आपका ऐसा है, बट इन नियर फ्यूचर इट में गो लाइक दिस. दिस थिंग यू सी हियर, दिस चेंज, दिस इज द प्रिसेशन, दिस इज द प्रिसेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ प्रिसेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ प्रिसेशन. ये वाली एक्सिस जिसके राउंड ये डायरेक्शन चेंज हो रही है अर्थ की एक्सिस की, दिस इज द एक्सिस ऑफ प्रिसेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ प्रिसेशन. और ये जो चेंज आ रहा है, दिस होल थिंग इज नोन एज द प्रिसेशन. Is that clear? Is that clear? This change in precession again leads to this change in precession, along with change in orbit, shape of orbit of Earth, change in obliquity, and change in precession itself may lead to change in climate. May lead to change in climate, because the intensity, because the the amount of solar radiation that is received on the surface of Earth, that is again influenced by all these things. Is that clear? Is that clear? भाई बोलो, ठीक है. So though it is we are talking of the current paradigm, we are talking of the current that is, it is pointing towards the Polaris, but in the near future it may point towards the Vega. In the past, it has pointed towards some other star. So there is continuous change in direction of this Earth, axis of Earth. Okay, when you discuss it
with respect to the heavenly bodies out there. समझे? इज दैट क्लियर? आपको कुछ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप देखते हो। अभी आपका घर कहाँ पे है? जहां पे भी आप लोग रहते हो, या आपका रूम है, आप रेंटेड अकोमोडेशन में हो, आपका अपना पर्सनल घर है, जहां पे भी आप रहते हो। अब वहां से मैं आपको बोलूं कि यहाँ का डिस्टेंस क्या है, यहाँ की डायरेक्शन क्या है, तो किसी एक चीज को तो आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। यू विल चूज दैट पर्टिकुलर हाउस एज यूर रेफरेंस। आप उसके अकॉर्डिंग ही देखोगे कि आप नॉर्थ ईस्ट में ट्रेवल करके आए, आप नॉर्थ वेस्ट में ट्रेवल करके आए, साउथ ईस्ट में गए, साउथ वेस्ट में गए, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट कहां गए, आप लोग उसके रेफरेंस में देखोगे। सिमिलरली अर्थ की एक्सिस अभी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये पोलरिस की तरफ पॉइंट कर रही है, बट इन नियर फ्यूचर इट मे पॉइंट टुवर्ड्स द वेगा एज वेल, एंड इट विल इफ एवरीथिंग गोज लाइक दिस, इफ एवरीथिंग गोज लाइक दिस। कहीं कुछ और ना हो जाए, अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर किसने देखा, ठीक है ना। तो फिर वो चीज है, दैट थिंग यू सी, दैट वोबल दैट इज देयर, इट इज द प्रिसेशन, एंड दैट पर्टिकुलर एक्सिस जिसमें ये रिवॉल्व करता रहता है, इसके राउंड जो प्रिसेशन चेंज होती रहती है, जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ की, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, समझ रहे हो भैया, एक्सिस ऑफ रोटेशन की। तो जो डायरेक्शन अगर चेंज होती रहेगी, दैट होल थिंग इज नोन एज द प्रिसेशन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है। सो दीज थिंग्स टुगेदर, एंड वन मोर थिंग इज देयर, एप्साइडल प्रिसेशन। ठीक है, एक तो आ गई किसकी, एक्सियल, एक्सिस ऑफ रोटेशन की, एक आ गई एप्साइडल। एप्साइडल इज रिलेटेड टू द इलिप्टिकल प्लेन, एप्साइडल इज रिलेटेड टू द इलिप्टिकल प्लेन, दैट अगेन keeps changing, that again keeps changing. Is that clear? Is that clear? So these things together, apsidal and axial together, in coordination with obliquity and changing shape of earth, these all things together may lead to change in climate of the earth because of the change in insolation received, change in the intensity of the insolation, that may also lead to the change in climate. So these things together are called as the Milankovitch cycles. First cycle is related to the changing shape of earth, shape of orbit of earth, shape of orbit of earth. The second is related to the axial tilt, and the third is related to the precession. Is that axial tilt या tilt of axis एक ही बात हुई, obliquity की बात हो रही है, ठीक है। Axial precession and apsidal precession. Apsidal है, APSADAL, apsidal. Okay. So now you will write something जो अभी तक डिस्कस किया है. Then we will see कि if we have time, तो we will go further. Is that clear? यहाँ तक clear है? पूछना चाहते हो कुछ? नहीं, कुछ नहीं पूछना है. Okay. So start writing. You too, Aman. Please take note. Okay. 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 Now start writing. Okay, write climate change. Write climate change. लिखो, climate change refers to quickly, ठीक है, climate change refers to long term shifts. Climate change refers to long, आप भी लिखो, हाँ लिखोगे आप भी, आप यहाँ पे थोड़ी क्लास में ऐसे बैठोगे, कुछ नहीं होगा, यू विल गेट समथिंग। अब मैंने जब वो करवाया है, मुझे नहीं पता मैंने क्या करवाया है, ठीक है। नाउ यू स्टार्ट राइटिंग अगेन, लिखो ना, अलग से लिखो, कहां दिक्कत है आपको। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू, लिखिए आप लोग, क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर्स, क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर्स, refers to long term shifts in temperatures and weather patterns, full stop. The terms global warming and climate change, are sometimes used interchangeably. The terms global warming and climate change are sometimes used interchangeably, but global warming
but global warming is only one aspect of but global warming is only one aspect of but global warming is only one aspect of climate change aspect of climate change full stop next line में लिखो climate change in IPCC means Intergovernment Panel on Climate Change. Okay, in bracket you can write IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Okay, लिख लिया climate change in IPCC usage refers to climate change in IPCC usage refers to IPCC's Intergovernmental Panel on Climate Change. Okay, climate change in IPCC usage refers to a change in the state of the climate. Refers to a change in the state of the climate. State of the climate that can be identified that can be identified that can be identified that can be identified by changes in the mean that can be identified by changes in the mean MEAN averages. Okay, by changes in the mean and or slash or the variability of its patterns or the variability of its properties लिखना patterns नहीं properties or the variability of its properties and that persists for an extended period typically decades or longer typically that persists for an extended period typically decades or longer full stop typically decades or longer full stop it refers to any change in climate over time whether due to WHETHER okay weather नहीं कर देना whether due to internal variability whether due to natural variability or as a result of human activity ओके फुल स्टॉप हम साथ साथ हैं यहां तक है ना यहां तक ठीक है ओके नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट पैरा ओके नेक्स्ट पैरा द अर्थ's average climate is determined by its radiative balance the earth's average climate is determined by its radiative balance radiative RADIATIVE balance ओके जनाब ठीक है radiative the earth's average climate is determined by its radiative balance that is the balance between the amount of energy entering
amount of energy entering and exiting the earth system, that is the balance between the amount of energy entering that is the balance between the amount of energy entering and exiting the earth system, entering and exiting the earth system. Earth as a whole is a system. Is that clear? Is that clear? Earth is an open system. Earth is an open system. ठीक है, but there is one problem. Because of the gravity, the movement of the mass, okay, that is restricted. That is restricted. Is that clear? Because of gravity. But for energy, it is open system. Okay, there is exchange of energy with the space. सन से आती है, बाकी हम एंट्री भी होती है बाहर, बाकी मैक्सिमम एनर्जी हम रिसीव करते हैं सन से. मैक्सिमम एनर्जी हम किससे रिसीव करते हैं? सन से. ठीक है, लेकिन वो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है स्पेस में जब इंटर करती है. इंटर करने के बाद कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ स्कैटर होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है. सो फॉर एनर्जी अर्थ एक्ट्स एज एन ओपन सिस्टम. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके ओके, कहां तक लिखा? exiting the earth system, full stop. Changes in radiative balance, changes in radiative balance, changes in radiative balance, changes in radiative balance result from changes in radiative balance result from changes to first you write first point 1, okay. Results from changes to 1, amount of energy entering the earth system, amount of energy entering the earth system, amount of energy entering the earth system, amount of energy entering the earth system. Second point you write amount of solar energy, amount of solar energy, amount of solar energy absorbed by the earth system, absorbed by the earth system, absorbed, Sakshi absorbed करना, absorbed by the earth system, okay. Third point you write amount of long wave radiation, amount of long wave radiation emitted to space, amount of long wave radiation emitted to space. Now who will tell me this emitted to space? हो गया सबका? Now who will tell me this about these long wave radiations? What are these long wave radiations? ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके हो जाता तो फिर यूपीएससी में ऐसे ही बोलता मैं भी ऐसे हो गया. What are these long wave radiations? Back towards the atmosphere is known as long wave radiation. बिल्कुल गलत, टोटल गलत. Who will tell me what are these long wave radiations? रणधीर, रांची, रूबी, मन्नत, नेहा सोच रही है मेरा नाम नहीं आना चाहिए लेकिन आ जाता है, क्या करें अब. उमर, आमिर, साक्षी, you Aman out there, what are these long wave radiations? No idea. नहीं, listen. Earth absorbs the incoming solar radiations. Earth largely acts as a black body that absorbs the radiations. After attaining a certain temperature, okay, it starts emitting the radiations. Those radiations that are emitted by the earth are long wave radiations. वो आप वही स्कैटर करके वापस भेज रहे हो, वो तो वही है, ठीक है. The earth absorbs them, the incoming radiations, then after attaining certain temperature it also emits radiations. Those emitted radiations are the long wave
radiations. Why these are called long wave? Why the incoming are called short wave? Because there is change difference in wavelength. The incoming incoming radiations, they are slightly of shorter wavelength. The outgoing, okay, the infrared radiations that are emitted by the earth, okay, those are slightly having this longer wavelength. That's why they are called the long wave radiations. Is that clear? Is that clear? So these, ये clear हो गया? So radiative balance is entering minus exiting. Perfect नहीं कहा मैंने. Like a black body. No. Black body. You are confusing yourself with something called black body. Black body एक हो गई आपकी black hole नहीं. ठीक है. Black body is a concept in हाँ is the black body, one that absorbs. After absorption, the temperature increases. Okay. Once that temperature reaches a threshold, then that body will start emitting radiations. It acts like a black body. It is not perfect black body. It acts like a. Okay, that's why it's emitting radiations. Otherwise absorb कर लेती, बात खत्म. लेकिन absorption के साथ साथ emission भी कर रही है. But that emission is because of the absorption. Is that clear? It is not perfect black body. Remember, Earth is not perfect black body. वो तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है. आइडियल केसेस में आपका बोल्ट्जमैन लॉ जहां पे लगता है, ठीक है, वो बहुत मतलब आइडियल क्या कहते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडीज डज नॉट एग्जिस्ट. Remember this thing. There is always some loss. There is always something that is not getting converted into the these exiting rays. नहीं, we consider these things as black body. ठीक है. No, these are not perfect black bodies. We can, like the case of this carbon. ठीक है. आपके पास आता है जब हम उनको बॉडीज उनको हम चेंज करते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में, बट देयर इज सम लॉस. ओके, दैट इज नॉट गेटिंग परफेक्ट. का क्या है, जितना आए उतना ही इमिट कर देना है. हाँ, 100%. तो ऐसा तो कहीं नहीं होता, सिस्टम्स में ऐसा नहीं होता. दैट इज वो बोल्ट्जमैन का लॉ है, वो वहां पे लगेगा, यहां पे नहीं. वो आइडियल ब्लैक बॉडी है. समझे? ये ठीक है. माइनस एग्जिटिंग, जितना आ रहा है, स्कैटर कितना हो रहा है, अर्थ लॉन्ग वेव से कितना जा रही है, तो वो जो बचेगा दैट इज द रेडिएटिव बैलेंस. दैट इज द रेडिएटिव बैलेंस. ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट यू राइट फैक्टर्स दैट चेंज द, अरे नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, नेक्स्ट पैरा लिखो आप. फैक्टर्स दैट चेंज द, 3 पॉइंट लिखे ना. फैक्टर्स दैट चेंज द radiative balance. Factors that change the radiative balance. Mannat, please take out your pen as quickly as possible. Okay. Factors that change the radiative balance and thus climate are called forcings. Forcings, FORCINGS, are called forcings underline कर लेना, ठीक है, are called forcings and can be either natural or anthropogenic, okay, these factors can be either natural or anthropogenic. ठीक है, full stop. A positive forcing leads to global warming. A positive forcing leads to global warming. And a negative forcing leads to global cooling. A positive forcing leads to global warming and a negative forcing leads to global cooling. Full stop. Cooling. Full stop. These forcings act
these forcings act on a variety of different time scales. These forcings act on a variety of different time scales. These forcings act on a variety of different time scales. These forcings act on a variety of different time scales from decades to millions of years. From decades to millions of years. Full stop. Some of the most important factors influencing the Earth's radiative balance, some of the most important factors influencing the Earth's radiative balance, and thus climate are here as under. Okay, are here as under. Okay, here 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 as under. पहला लिखो ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ क्लाइमेट. ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ क्लाइमेट, उसमें पहला डिस्कस करेंगे हम मिलेनकोविच साइकिल्स. लिख लेना ब्रैकेट में मिलेनकोविच साइकिल्स. ओके, ये वाले मिलेनकोविच साइकिल्स. ओके, लिखो मिलेनकोविच साइकिल्स. ठीक है, पहला लिखो ऑर्बिटल वेरिएशंस. पहला लिखो ऑर्बिटल वेरिएशंस. लिखो यार ऑर्बिटल वेरिएशंस. ब्रैकेट में लिख लो चेंज इन शेप ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट. लिखो अर्थ ऑर्बिट शेप varies between Earth's orbit shape varies between an eccentricity of eccentricity 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 Earth's orbit shape varies between an eccentricity of 0.0034 ब्रैकेट में ऑलमोस्ट ए परफेक्ट सर्किल. ये लिखा मैंने 0.0034 ऑलमोस्ट ए परफेक्ट सर्किल ब्रैकेट क्लोज. सर्किल ऑलमोस्ट बोला मैंने और नियरली सर्किल. ओके, परफेक्ट सर्किल नहीं बोला मैंने. रिमेंबर दिस थिंग. ऑलमोस्ट ए परफेक्ट सर्किल टू 0.058 to 0.058. नहीं डालना है डाटा, मैं आप लोगों को दे रहा हूं, कुछ नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा डेटा, चिंता मत करो. जब पढ़ रही हो ना तो अच्छे से पढ़ो, बस कंसर्न ये होती है स्लाइटली इलिप्टिकल. ठीक है, समझे? एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ रहे हो आप, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो. ठीक है, ये मेरा फर्ज आपको बताना इसलिए बता रहा हूं, नहीं बताऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, क्योंकि एक पहलू करना है दूसरा छोड़ना अच्छी बात नहीं होती. दोनों पहलू कर लो फिर पता चलता है क्या हो रहा है. क्लियर? ठीक है, स्लाइटली इलिप्टिकल. ओके ओके, क्या लिखा है मैंने? अर्थ ऑर्बिट शेप वेरीज बिटवीन एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 0.034 to 0.058 है बेटा.
0.00 नहीं है, 0.058 है. Slightly elliptical over a cycle of thousands of years, over a cycle of thousands of years. This change in eccentricity or shape of orbit of Earth, this change in eccentricity or shape of orbit of Earth is because of gravitational pull of our solar systems, gravitational pull of our solar systems, our solar systems, two largest gas giant planets, two, that is Jupiter and Saturn. Is that clear? Jupiter and Saturn. Okay, full stop. ठीक है. GIANT, giant. Okay. Eccentricity is the reason. लिखो, next लिखो. Eccentricity is the reason. लिखो यार. Eccentricity is the reason why our seasons are of. Why eccentricity is the reason why our seasons are slightly of different length. Eccentricity is the reason why our seasons are slightly of different lengths. Okay. With summers in the northern hemisphere, currently about 4.5 days longer than winters. With summers in the northern hemisphere, currently about 4.5 days longer than winters. Currently about 4.5 days longer than winters. With summers in the northern hemisphere, currently about 4.5 days longer than winters, and springs about 3 days longer than autumns. Okay. Summers 4.5 days longer than winters, and springs are 3 days longer than autumns. Okay, next लिखो. As eccentricity decreases, the length of our seasons, the length of our seasons gradually evens out. Full stop. Okay. Evens, EVENS, evens out. Okay, EVENS, evens out. Gradually evens out. Okay. Next you write the difference in distance between Earth's closest approach. The difference in the distance between Earth's closest approach. The difference in the distance between Earth's closest approach to the sun bracket में known as perihelion. Okay, known as perihelion. Okay, साथ में लिख लेना January 3.
Okay, January 3. Okay, known as perihelion, 7 मिली January 3, and its farthest departure from the sun, and its farthest departure from the sun, and its farthest departure from the sun, ब्रैकेट में नॉन एज एपेलियन, APHELION, ओके, नॉन एज एपेलियन, साथ में कॉमा डाल के जुलाई 4 ब्रैकेट क्लोज, ओके, is currently about 5.1 million kilometers, is currently about 5.1 million kilometers. ठीक है, फुल स्टॉप. That means each January about 6.8%, that means each January about 6.8% more incoming solar radiation, 6.8% more incoming solar radiation reaches earth than it does each July. Okay, the insolation that is received in January is slightly more than the insolation that is received in July. That is because of the perihelion. Okay, full stop. Next you write it does each July, हर साल, हर जुलाई में, ठीक है, full stop. Next you write when earth's orbit is at its most elliptic, when Earth's orbit is at its most elliptic, about 23% more insolation is incoming solar radiation. Okay, insolation is incoming solar radiation, remember this thing. Okay, about 23% more insolation reaches earth, about 23% more insolation reaches earth at our planet's closest approach to the sun each year, then does at its farthest departure, from the sun, full stop. Next para में currently Earth's eccentricity is very slowly decreasing. Earth's eccentricity is very slowly decreasing and is approaching its least elliptic, bracket में most circular, okay, bracket close, in a cycle that spans about 1 lakh years,
Okay, now we are transitioning to the least elliptic, from the highly elliptic path to the least elliptic path. Is that clear? Is that clear? And when that least elliptic path will be there, the extremes that we are witnessing, those there will be moderation. There will be moderation. That will be right after this. Okay, full stop. Full stop. Okay. The total change in global annual insolation. The total change in global annual insolation. The total change in global annual insolation due to eccentricity cycle is very small, is very small, is very small. Because full stop के बाद लिखो, because variations in earth eccentricity, because variations in earth eccentricity, because variations in earth eccentricity are fairly small, they are a relatively minor factor in, they are a relatively minor factor in annual seasonal climate variations. They are a relatively minor factor in annual seasonal climate variations. Annual seasonal climate they are a relatively minor factor in annual seasonal climatic variations. Okay, full stop. Okay, okay, now this is the eccentricity. Now you guys have a fair idea. Nothing is permanent. Nothing is permanent. Everything keeps on changing. Even the Earth orbit, the shape of orbit, that is changing continuously. Though our 1 lakh year cycle, our cycle of 1 lakh साल में, it will approach the least elliptical orbit, the most circular orbit. Then again, it will move towards the highly elliptical orbit. Is that clear? That change in eccentricity may lead to the change in the amount of insolation that is received on the Earth's surface. Is that clear? ओके जब हाईली इलिप्टिकल होगा तब आपका 23% का डिफरेंस आ जाता है, जब लीस्ट होगा तब अभी करंट टाइम की बात करें 6% का डिफरेंस है, लेकिन जब हाईली इलिप्टिकल हो जाएगा तब 23% का डिफरेंस आ जाएगा। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज तो आएगा ही इंसुलेशन में, जैसे जैसे इंसुलेशन बढ़ेगी, कंप्लीट बाय अदर फैक्टर्स कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, देयर मे बी कूलिंग भी हो सकती है, अगर अदर फैक्टर्स बाकी फैक्टर्स कूलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं तो जो इंक्रीज इन इंसुलेशन है दैट मे बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय सम अदर थिंग, क्योंकि एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स एट द सेम टाइम काम कर रहे हैं, समझे आप लोग। बट दिस कैन बी वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द चेंज इन क्लाइमेट एंड दिस इज वेरी नेचुरल। इसमें ह्यूमन कुछ नहीं कर सकते। अभी ऐसा तो नहीं कि अर्थ पकड़ के तो तुम सर्कुलर कर दो इसका ऑर्बिट, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, अब नहीं कर सकते ना, या कल को सारे के सारे 7.6 बिलियन या जितने लोग हैं इस धरती पे वो सारे के सारे उठ के चले जाएंगे, बोलेंगे हमने आज सर्कुलर कर देना ऑर्बिट। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता ना ऐसा। तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, द नेक्स्ट इज चेंज इन ऑब्लिक्विटी। The change in obliquity, you write something. Okay, we have discussed change in obliquity. You guys know what obliquity is. Okay, now you guys know what obliquity is. Okay, and that obliquity we will write something. ठीक है, देखते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं, then we will close the class for today. Okay, लिख लो obliquity के बारे में, लिख लो थोड़ा सा obliquity। obliquity लिखो, the angle at which Earth's axis of rotation, the angle at which Earth's axis of rotation is tilted as it travels around the sun,
sun as it travels around the sun. ठीक है, लिख सकते हो इसको ब्रैकेट में एक्सियल टिल्ट भी, ब्रैकेट में लिख लो एक्सियल टिल्ट, obliquity, axial tilt, one and the same thing. Is that clear? Is that clear? And how much is that angle with respect to the normal to the elliptical plane? 23 and a half. And how much is that angle with respect to the elliptical plane? 66 and a half. This one. Okay. Okay. So next you write. Obliquity is responsible for Earth's seasons. Obliquity is responsible for Earth's seasons. Full stop. What this obliquity does? It leads to change in seasons. The seasons that you are witnessing, summer, winter, autumn, spring, जो भी दिख रहे हो, तो that is because of the obliquity. अगर obliquity नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, एक जैसा सीजन रहता है हमेशा, ठीक है, गर्मी तो गर्मी, ठंड तो ठंड, एक जैसा टेम्परेचर, एक जैसा सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, over the last million years, it has varied between 22.1 it has varied between 22.1 and 24.5 degrees. It has varied between 22.1 and 24.5 degrees, 22.1 and 24.5 degrees with respect to the Earth's orbital plane. Okay. The greater, full stop करो, full stop के बाद लिखो, the greater the Earth's axial tilt angle, the more extreme our seasons are. The greater the Earth's axial tilt angle, the more extreme our seasons are, as each hemisphere receives more solar radiation, during its summer, when the hemisphere is tilted towards the sun, and less during the winters, when it is tilted away, Okay, full stop. These effects are not uniform globally. Hyphen डालो, are not uniform globally, hyphen डालो, ठीक है। Okay, higher latitudes receive a larger change in total solar radiation. Higher latitudes receive a larger change in total solar radiation than areas close to equator. Higher latitudes receive a larger change in total solar radiation than areas close to equator. Okay, full stop. आज के लिए इतना ही लिखेंगे, बाकी कल लिखेंगे, ठीक है। Okay, so from today's lecture, from today's class, you guys have a fair idea of
at least few things, ठीक है, that is also the syllabus of geography. At least you have fair idea of earth rotation, axis of rotation, axial tilt, the shape of the orbit, the eccentricity, the elliptical orbit. Okay, apart from that, one more important concept that you guys have now is the precession. Okay, that is very important. All these concepts are very important. Is that clear? Most of the time UPSC asks questions directly or indirectly related to these topics in your prelims exam. In the main exam, geography की बात कर रहा हूं मैं. Environment क्योंकि सुनो यार, environment क्योंकि overlap करता है geography के साथ बहुत ज़्यादा. We have environmental geography as well, overlap करता है. इसलिए जो बेसिक था आज आपका ये, it was related to this climate change was related to the basics that are there in the geography, like the earth rotation, earth's revolution, earth's precession, axial tilt, obliquity, shape of the orbit, इन सब चीजों से related था. Is that clear? Okay, that's it for today. We will be meeting tomorrow. Okay.